Hello, good morning, students. Today we are going to discuss discounting principle. In the earlier videos, we discussed two concepts: incremental concept principle and opportunity cost. Opportunity cost is a very interesting concept and helpful in taking business decision. Next best alternative, that is sacrifice of organ. उसके जैसा ही और अडर उससे एक स्टेप आगे है डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल. Because opportunity cost does not consider time value of money, this concept considers time value of money. So the concept is very helpful in taking business decision, particularly investment decisions. Okay, so on the basis of discounting principle, you will study net present value method and internal rate of return in future. So what is discounting principle? Discounting principle based on fundamental fact that present satisfaction is more important than future satisfaction. कल हो ना हो, कल किसने देखा है? जैसे a rational individual gives more importance to present satisfaction rather than future satisfaction. Therefore, future must be discounted on the basis of element of delay and risk of uncertainty. I am repeating the statement. Future must be discounted on the basis of element of delay and risk of uncertainty. Delay है और uncertainty. उससे समझ बराबर नहीं आएगा. We will take an example. Suppose a rational individual, suppose a person has two choice. Either he can accept 100 rupees today, or he can accept 100 rupees after a year, after 1 year, एक साल के बाद, after a year. He can accept 100 rupees today, or he can accept after a year. This is first alternative, this is second alternative. It is quite obvious that he would select the first alternative. What is the reason? Reason is future is uncertain. Pehla reason. Second, if he accept 100 rupees today, so the money can be invested and he can earn interest or dividend. अगर 100 rupees है, 10% interest है, so obviously after a year उसको कितना मिलेगा? 110. 110 रुपया इन्हें मर्स. But he does not accept 100 rupees today, he will receive only 100 rupees after a year. और उसका जो 100 rupees है, उसका वैल्यू 100 rupees नहीं होगा. Why? Because he has missed the opportunity of earning income by investing money. Okay, that is discounting principle. Okay, we will try to understand with the help of mathematical example. हम लोग example ले लेते, बराबर समझ में आएगा आपको. कि suppose x0 amount of money is invested for 1 year. हम लोग अभी फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करें. ओके, सो एक साल के उसका जो मिलने वाला है उसको हम लोग x1 कह लेते हैं. नाम उसका है x1. सो एक साल के बाद क्या मिलेगा? x0 प्लस इंटरेस्ट ऑफ x0. ओके, x0 प्लस x0 इंटू r मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट. x0 कॉमन करते हैं, सो x0 प्लस नथिंग है, सो 1 प्लस x0 कितना है हमारा? 100 रुपीज. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%. सो 10 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना होगा? 1/10. ओके, सो हियर वी हैव टू टेक एलसीएम. 11/10, सो 1.1 और 1.10 जो भी हम लोग के, तो इसको क्या? 110. सो इफ अ पर्सन एक्सेप्ट 100 रुपीज टुडे, he can invest money
and he can earn income by earning investing money. So इसको 10 so हमारा x1 is equal to x0 1 plus r. But we are not discussing this. हमको तो ये फाइंड आउट करना है कि इफ अ पर्सन डज नॉट सेलेक्ट द फर्स्ट अल्टरनेटिव and he will select the second alternative because we have to find out time value of money. तो क्या होगा? So x1, so हम लोग चेंज करते हैं पोजीशन, x1 इधर आ जाए. So x0 is equal to x1 upon 1 plus r. right? डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर चेंज हो जाएगा. गुजराती में कहते हैं अंशनी वस्तु छेदमा जैसे हमने छेदनी वस्तु अंशमा से. आफ्टर अ ईयर भी उसको कितना मिलने वाला? 100. 1 plus 1 upon 10, so 100 divided by 1.1, so 90.9. If a person does not accept 100 rupees today and if he accepts 100 rupees after a year, जो 100 रुपीज मिलने वाला है उसको एक साल के बाद उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 90.9. गुजराती में कहिए तो आवता वर्षे મળનાર 100 રૂપિયાનું વેલ્યુ કેટલું થશે? 90.9. This is discounting principle. If a person does not accept 100 rupees today and after a year accept करे तो 2 साल के बाद तो क्या x1 1 plus r plus x2 1 plus r. ओके, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हो जाएगा. ओके, सो व्हाई? बिकॉज फ्यूचर इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी and the person miss the opportunity of earning income. Net present value matter. So this is discounting principle. So whenever firm takes investment decision, firm has not only to consider what is the rate of return and how long the project will give return, and the firm can find out the time value of money on the basis of discounting principle. Suppose a X person invested rupees 3 lakh in a project and the project will work for 5 years. मतलब the project last for 5 years. So उसको 5 साल तक मिलेंगे, 5 years. Durability of the project is expected 5 years, and every year the project is expected to generate return of 1 lakh rupees. Okay, 1 lakh. बट डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल से हमको क्या मालूम पड़ेगा कि पहले साल में मिलने वाला 1 लाख का वैल्यू और 5th साल में मिलने वाला 1 लाख का वैल्यू सेम नहीं रहेगा. ओके, वाई? बिकॉज जितना हम लोग फ्यूचर में करेंगे उतना रिस्क बढ़ता जाएगा, अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी और द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर भी इतना बढ़ता जाएगा. So value of in the first year or second year and value in the 5th year will not be same. Why? Because this method considers time value of money. So this is discounting principle. Getting my point? Future must be discounted on the basis of element of delay and risk of uncertainty. I think the concept is clear to you. ये example से आपको एकदम clear हो जाएगा कि why the person is selecting the first alternative and why the person is not selecting the second alternative. और जितना लंबा प्रोजेक्ट होगा, जितना ड्यूरेशन ज्यादा होगा, उतना रिस्क ज्यादा होगा, अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी और इतना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ज्यादा होगा. सो विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल वी कैन टेक effective decision in the selection of best investment proposal. So डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल के बेस पे आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी. इट इज कंसिडर इज द बेस्ट मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग. इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में अगर कोई बेस्ट मेथड है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है. ओके, सो दिस डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल आज के लिए इतना रहेगा. थैंक यू वेरी मच.